Fine. Acha. You forgot about this interview for today. Acha. Doesn't matter. So, which Yes, date is your AAO interview and in which place? sir. I have my interview on 28th of June. का किधर है? Sir, in Delhi CP, Connaught Palace. दिल्ली कनॉट प्लेस. गुड. अच्छा जी, आप आपका बारे में थोड़ा पूरा बता दीजिए. जैसे Yes, हम sir. लोग कब अच्छा हो जाएगा आपको सेलेक्ट कर देंगे. Hmm. Sir, my name is Dishant Bhardwaj, and I am from a very small town named Dubai, which is in district Bulandshahr, which comes under Uttar Pradesh. And sir, the district which has given the most number of soldiers for our Indian Army, Air Force, and Navy. There are four members in my family. My father, who is chemistry lecturer, my mother, who is homemaker, and my brother, who has done his graduation from Delhi University, and he is also preparing for government exams. And so I have done my engineering from ABES Engineering College, which comes under AKTU University. If I talk about my hobbies, I love playing and watching cricket and doing pencil sketching and still doing oil paintings. Good. So Yeah. if, Have you if I applied for Bank of India also? yes, sir, I have already applied. IT officers? No, sir. Credit. Mistake. Yeah, sir. Actually, I applied for credit office. Okay. You have been selected? Yes, sir. Oh, very good. Again, we'll meet you. I'll meet Yes, you again. sure. I'll meet you again today. From today, classes start. Doesn't matter. Now, Okay. coming to this, so you passed out a degree in which year, Sir, Bharadwaj? in 2019. People call you Dishant or Bharadwaj? Sir, people call me Dishant. 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 Yes. What is the meaning of Dishant? So basically, this is a combination of Disha plus Ant. It means end of directions. Means limitless. Limitless. Dishant. Yes. Very good. अच्छा जी, आपका पिताजी क्या काम करते हैं? So my father is chemistry lecturer. अच्छा, मदर? Sir, she is homemaker. होम मेकर. कितना सिबलिंग है आपका? Sir, I have only one younger brother. Only one younger brother. Doesn't matter. Good. Now, how keen are you? What are the other exams you have come up to interview stage? Sir, I gave interview in RRBPO this Achha. year, Oh, but did not qualify for the how many final marks merit did list. you score in interview? Around 75. 75 is a good pass. Good percentage Yes, of sir. marks. It's a good one. You didn't take my mock interview also, is it not? Yes, You no, were sir. only watching Actually, my videos probably. yes, Where, sir. Yes. yeah. So you scored Yeah. 75. It's a very good mark. I really appreciate you. Now, regarding this LIC AAO, please tell me what all good points you remember about LIC. So, the best point I have gone through is, sir, LIC का जो भी sum assured में परसेंटेज थी, तो अराउंड 70.34% में LIC का हिस्सेदारी था. बाकी में जितनी भी कंपनियां थी वो 29% में. तो सर LIC को ये एक तरह से मोनोपोली भी कह सकते हैं, लेकिन सर स्ट्रॉन्गेस्ट एक तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता है जो है इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में. सर मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है. और एक सर एकमात्र जो है गवर्नमेंट इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है. बट आपका इंट्रोडक्शन ठीक नहीं है. मैंने LIC के बारे में पूछने से, किसी आदमी पूछने से आपने ये बताना है LIC इज द ओनली लाइफ पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. फर्स्ट सेंटेंस. LIC headquarters is in Mumbai. The chairman is Mr. So and so. Then it was started in the year 1956 by merging so many companies together. Okay. LIC has so far issued more than 28.7 crore policies as on 31st March 2022. LIC is having so many employees. LIC is having so many agents.
and LIC 30 has lakhs got so agents. many zonal offices. LIC has got so many divisional offices. LIC has got so many branch offices. LIC has got so many, what is that, another type of office? What is that another one called? That is branch office. Another one is Zonal office. satellite offices. 1400 and dot satellite of ISMAP अब facts बताना है. सर मैंने सोचा कि एलआईसी के बारे में गुड थिंग क्या लगती है आपको? No, but आपने जो बोला वो तो it was not interesting at all. आपने जो बोला it was not at all interesting. कुछ impact कर नहीं पाया. Maybe you can cover it after telling this. बट जो कुछ बात कर रहे हैं हम लोग इस LIC का बारे में बढ़िया बात बोलना है. And LIC has got so many agents. Once you tell about agents, you can also tell about Anand app. LIC has got Anand app for agents. ISMAP clearly बोलना है. Can you try now again, once again? आप बता दीजिए. Can you tell me what all good points you remember about LIC? And yeah, and if you remember how much is the share capital of government, you can tell some 99%, whatever it is. 96.5%. 96, whatever it is. Good. अभी बताइए, शुरू कर दीजिए. यस सर. सर एलआईसी के जो अभी चेयरपर्सन है वो सिद्धार्थ मोहंती जी हैं. और एलआईसी का जो गठन हुआ था सर 1956 में हुआ था. सर अराउंड 13 लाख एजेंट्स हैं एलआईसी के पास अभी. और जो इस क्वार्टर का जो उनका प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स 36,000 करोड़ था. और सर अभी 3.5% जो है स्टेक जो है आईपीओ में पब्लिक किया गया था. तो अभी फिलहाल में गवर्नमेंट का स्टेक 96.5% है. तो 3.5% की जो वैल्यू थी वो सर 21,000 करोड़ थी. फिर भी आप see you सर didn't. what Why did you not tell about the previous points I told you? ये सर जोनल ऑफिस. बताइए. सर एलआईसी का हेडक्वार्टर सर मुंबई में. सर अराउंड 108 जोनल ऑफिसेज हैं एलआईसी. How many zonal offices है? 8 zonal offices. अच्छा आपने प्रिपेयर नहीं किया, इसका बारे में प्रिपेयर कर दो पूरा पूरा. बिल्कुल आपका इसका बारे में प्रिपरेशन ठीक नहीं है. 8 zonal offices, some 113 or 114 divisional offices, them 2,880 so on. I don't know the exact number. ये सब सिद्धार्थ मोहांती is the chairman and managing director. ये सब बताना है ना. ओके कोई बात नहीं. What do you know about Anand app? Actually, I have not gone through this Anand app. Anand app is actually an app for agents. Agents will have to fill up this particular so that your work will be made easy. ये वो काम easy हो जाएगा, कोई बात नहीं. Now, what is the difference between ये DO and ये वो? सर बेसिकली डब्ल्यू का जो काम रहता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहता है. जो नई पॉलिसीज या पुरानी पॉलिसीज है उन्हें फॉर्मुलेट करना, जो स्टाफ है उनके साथ में कोऑर्डिनेट करना. और सर एडीओ रहता है सर असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर. उनका बेसिकली काम ये रहता है कि उनके अंडर एजेंट्स उन्हें रिक्रूट करने होते हैं और उसके हिसाब से वो पॉलिसीज वगैरह का जो उन्हें मतलब पॉलिसीज वो सेल करते हैं लोगों को. डब्ल्यू का बेसिकली सर काम ऑफिस वर्क ही रहता है. जो एडमिन वाले काम रहते हैं जैसे किसी का क्लेम सेटलमेंट होना है या किसी से कस्टमर से इंटरेक्ट करना है. तो इतना ही मतलब बेसिकली यही काम रहता है. Mainly he has to take care of issue of policies and also making payment of commission to agents, making payment of say incentives to DO and all that. Okay. Yes sir. Good. Are you ready with all the documents? Preparation सब ठीक से करा दिया? Yes sir. You belong to OBC or general category? Sir, general. General category. अच्छा अच्छा. Yes sir. Oh,
So what is your native place, you said? Sir, Dubai, actually, in district Bulandshahr. Uska, please tell me the plus points about your native place. And if some visitor comes to your native place, what are the points you will tell him about your native place? Yes, sir. So there are so many points. Like we have given the most number of soldiers in Army, Air Force, and Navy. And so there is Karn was near over where the Karn जो है दान अपना करते थे, उनकी माता जी का यहाँ पे मंदिर है, चिंतामणि मंदिर। तो Hmm. जो चिंतामणि मंदिर है, चिंतामणि जी जो थी उनकी बहन है वेलोन देवी, उनका भी यहाँ पे मंदिर है। और Hmm. सर नरोरा पावर प्लांट है यहाँ पे जो 1991 में जो है बनाया गया था। Hmm. अराउंड 7 पावर प्लांट्स हैं, पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं पूरे इंडिया में, उनमें से एक हमारे यहाँ नरोरा में है। Hmm. Good. तो सर Acha, जिसके उत्पादन में can you tell me why should I select you? आपको क्यों सर preference हम देना है? What सर are the plus points in you? सर पेशेंस, Hmm. I have introduced meditation into my life, which makes Hmm. me more patient and calm person. And sir, as a cricket lover and player, मैंने काफी ज्यादा मैचेस में अपनी टीम को कैप्टन किया है, तो Hmm. वो मुझे एक लीडरशिप क्वालिटी देता है Hmm. और टीम वर्क मुझे सिखाता है, और टफ सिचुएशंस में कैसे काम रहना है, कैसे पेशेंट रहना है, ये मुझे सिखाता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी क्वालिटीज मेरे अंदर है। Mhm. Good. So what you studied triple E or ECE? ECE सर, ECE. What is ECE? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। What are the big companies in our country? So for ECE, big companies are Synopsys, Nokia, Telecom, Airtel is there, no, Siemens is there, Ultron is there, and BSNL is also Mhm. there, and one big company is MDocs is also there. Mhm. Siemens, you're right. Siemens, Yeah, BHEL, Siemens, Bell, yeah, BSNL, yeah, NTPC, LG Electronics, Bharat Electronics, Wipro Electronics, yeah, Honeywell, Havells India, ITC, HCL Tech, वोडाफोन आइडिया, बट उसको भी क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं? वो तो सेल सर, फोन yeah, प्रोवाइडर ना। सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आ गया ना, तो अच्छा, कम्युनिकेशन ओनली में थ्रू वो भी दैट दे पढ़ाया डू जाता इट। अच्छा, देन है। ओनिडा इलेक्ट्रॉनिक्स, देन हम्म, टाटा, देन HPCL, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ह्यूलेट पैकर्ड, गॉडरेज ग्रुप। इतना एक्चुअली सर कम, ये जितनी भी कंपनीज हैं, ये सारे बाहर के प्रोजेक्ट्स को जो है everything कराते you हैं। don't have to tell, but briefly tell something. But if you tell about BSNL, they will put a cross question to you. What is यस सर। the assistance now given to BSNL by government? Some assistance they have given, you know about it? They have been या given some extra money for reviving certain things and all. उसका बारे में पूछने का उम्मीद है। Okay. So I don't know the exact figure, but I have heard it. अच्छा, 1 minute. BSNL package. BSNL package बोलने से तो it is telling about prepaid charges. Yeah, B yeah. BSNL assistance by government. The Union Cabinet headed by Prime Minister approved an allocation of 900 bar 1800. I will show you this. Union Cabinet headed by Prime Minister approved. The reason why I am asking questions relating to ECE, because in the recent LIC ADO interview itself, they have asked questions relating to this subject. So इसलिए उसमें पूछने का उम्मीद है. Union Cabinet headed by Prime Minister approved an allocation of
900 to 1800 MHz band spectrum worth 44,993 crore. This number you should remember. Roughly 45,000 crore for 4G support services to BSNL, which has skipped participation recent auctions of airwaves. This allocation, he said, will allow BSNL to compete in the market and provide high speed data. A point बोलने से हो जाएगा. Sure, sir. Very Around good. 45,000 crore. Yeah. Electronics oriented questions. Can you please tell me what is 5G? In what way this 5G will be helpful for our economy? सर सबसे मेन चीज जो है वो रहता है सर टाइम बचाते हैं. स्पीड का फर्क रहता है 3G 4G 5G सब. तो 5G में अराउंड 1000 Mbps तक स्पीड जाती है. तो हाँ अच्छा. सर तो 5G में मतलब मेन चीज तो यही है कि टाइम टाइम कम लगता है चीजों में. स्पीड अच्छी होगी तो सर गेमिंग वगैरह का फ्यूचर रहेगा कंट्री के लिए. गुड. और सर ब्रॉडकास्टिंग आपने अच्छी रहेगी. 5G रखा है आपके पास? सर नहीं, अभी मेरे एरिया में 5G है नहीं. 5G नहीं है एरिया में, नहीं आपका एरिया में नहीं है. गुड. Yes, sir. No problem. Good. Very nice. Now let me go to the next area. Good. थोड़ा आपका ECE का बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए ना. Yes, sir. हाँ बेसिक मैंने पढ़ लिया है. Right. Can you please tell me what is the difference between bank and LIC? Yes, sir. बेसिक डिफरेंस जो है बैंक क्या करता है कि जो भी उन्हें कस्टमर से मनी मिलता है उसे वो लैंड करते हैं और उस पर जितना भी इंटरेस्ट मिलता है उसे वो कमाते हैं. सर LIC क्या करता है जो भी उन्हें प्रीमियम इकट्ठा होता है एक तो उन्हें जो है अलग अलग जगह पे वो इन्वेस्ट करके उससे जो है प्रॉफिट कमाते हैं. तो सर बैंक इज ऑल अबाउट सर lending, giving loans and earning from the interest. And sir LIC is all about insurance sector is all about sir uh, taking the premium and investing that into any. See, actually, when you talk about LIC, you should tell about, say, public sector undertaking and also maximum number of policies issued. More than 62% business is handled by LIC. Then, iska baad mein you should tell that they are mobilizing the premiums, and the premium amounts are invested in various companies and also for social welfare activities. Yes. ऐसा पे कुछ बात बताना है. ठीक है. Sure, sir. Good. So you told about bank. You said you appeared for RRB interview. Yes, sir. Why were you not selected? Sir, actually मेरे जो मेंस में मार्क्स थे केवल कट ऑफ से 2 ही एक्स्ट्रा थे. अच्छा, कट ऑफ से only 2 plus. Yes. So that was not. You should have scored minimum 10 to 15. Yeah, 10 to 15. Yeah, very good. Excellent. But your interview mark was really good. Yes, sir. Actually, interview did went well. Yeah. Can you tell me about LIC IPO? Yes, sir. LIC ने जो अभी मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया था 3.5% स्टेक जो है पब्लिक किया था IPO की. तो जिसमें अराउंड 21,000 करोड़ रुपए का वो जब शुरू में जो प्राइस रखा गया था वो अराउंड 900 कुछ था. थोड़ा लेकिन अभी के please keep your mic near your mouth and speak ना. आवाज आता नहीं clearly. सर जो शुरू में जो you keep it like this. आपका माउथ का पास में है ना. ऐसा नीचे रखने से तो कम हो जाता है. थोड़ा ऊपर थोड़ा उल्टा कर दो. अभी ठीक आवाज आ रही है सर? Now it is good. Now it is okay. Continue. सर जो शुरू में जो प्राइस रखा गया था शेयर का वो अराउंड 900 रुपीज था. लेकिन वो अभी गिरता जा रहा है अराउंड 600 700 तक जा चुका है.
Okay, doesn't matter. So this is quoted in Bombay Stock Exchange. So Yes, sir. who is controlling these stock exchanges? Uh, Who is the authority supervising oh, the working of stock exchanges? SEBI, SEBI, sir. Securities Exchange Board of Security. India. Yeah. Mhm. And in fact, in one LIC ADO interview, they have asked, did you go through the questions that are being asked in LIC ADO? Yes, sir. उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, who are the regulatory authorities of LIC? Who are Mhm. all regulating LIC? ऐसा पूछा है. What Mhm. is the answer for this? Sir, IRDAI, Huh? Insurance Regulator. IRDAI. I also thought Yes. that is the only thing. But then Mhm. should we include SEBI also into this? Because, they only regulate about the share issue and all that. 1 minute. Because this is a Mhm. very doubtful question. LIC India regulated by Insurance Regulatory Development Authority, Financial Services. Life Insurance is an Indian public sector headquartered, has its branches. How life insurance India is regulated by IRDA only, it is telling. Acha, IRDA only, website of public sector companies, government regulation that rose from. In a way, I think the share issue is regulated by SEBI. SEBI. Yeah, Okay, sir. because they say, yeah, they only if they permit it can come. Yeah, very good. So now let me go for some other questions for you. Good, you're Mhm. answering well, but be confident. Okay. Hello. Hello, sir. आपका आवाज ब्रेक हो रहा था. Now I am speaking. Are you able to hear me? Yes, sir. You are able to hear me? Very good. Excellent. Now, who is the chairman of SEBI? Sir, Madhipuri Butch, I guess. Correct. Madhabi Puri Butch. Yeah, Butch. What is MSME? MSME, sir. Hmm. Yeah, medium, Ye- small, and micro, small, and medium enterprises. Very good. What is the definition of micro? Sorry, sir. I don't remember. Micro means investment in plant and machinery less than 1 crore and Okay. turnover less than 5 crore. Mhm. Okay, very good. So you said about your job role as say LIC AAO. Yes, sir. Now, what will you give to LIC more than what others can give? सर ये पब्लिक डीलिंग जॉब है तो सर एक बेटर जो है कम्युनिकेशन कस्टमर और एक डबल के बीच में मैं दे पाऊंगा. Very good. Now, can you tell me what is Section 10D of Indian Income Tax Act 1961? सर ये होता है जैसे मान लो Section सर 10, Section 10 of Income Tax Act. जैसे लाइफ इंश्योरेंस अगर किसी ने लिया हुआ है तो अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को जो भी अमाउंट मिलेगा उस पे कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगेगा. No, but here it is given starting from October 2014. If the amount received from life insurance policy is more than rupees 1 lakh on policies not covered under an exemption under Section 10D, then TDS at 1% shall be deducted by the insurer before making this payment. TDS will also be deducted from bonus payments. If the amount received is less than 1 lakh, no TDS will be deducted, but the amount received shall be fully taxable to you. You can claim credit for the TDS deducted in your income tax return.
The Union Budget 2019 has proposed to amend TDS on insurance policy proceeds to 5% of the amount of income comprised in the proceeds paid or payable upon maturity after September. I think this is only in respect of policies taken after 2014. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. According to the recent claims, basically जो भी नॉमिनी को जो भी अमाउंट मिलता है उस पे जो है टैक्स नहीं लगता है. Mr. Ram, as one of the directors of AIM Insurance Company, has taken some life insurance policies from the company. He now wants to avail a temporary loan from the company. The company refused to grant such loan on the ground that there is a prohibition in this regard. Mr. Ram approached you now about the matter. What will you do? Hello? सर आवाज ब्रेक हो रहा था. No, I'm asking Mr. Ram, one of the directors of AIM Insurance Company, had taken some life insurance policies from the company. He wants to avail company loan, avail temporary loan from the company. The company refused to grant such loan on the ground that there is a prohibition in this regard. What will you do? सर बेसिकली सर जो इंडोमेंट प्लान होते हैं उनमें आप लोन ले सकते हैं. जो टर्म इंश्योरेंस रहता है उसमें आपको जो है लोन नहीं मिलता उस इंश्योरेंस के ऊपर. But here, as per section 28, 1 minute. As per section 29 of Insurance Act, 29 of Insurance Act, no insurer shall grant loans or temporary advances either under hypothecation of property or on personal security or otherwise, except loans on life insurance policies issued by him within their surrender value to any director, manager, actuary, auditor, or officer of the insurer. If a company or to any other company or firm to which such director, manager holds position as their or partner. So in this case, the loan can be given. Loan can be given. As you rightly said, loan can be given. Good. Excellent. Good. Then Mr. X took life insurance policy on 1st January 2010 and nominated his close friend as a nominee to whom the money is secured by the policy in the event of his death. Later, No. hello? Yes, sir. You are audible, sir. Yeah, later, before the maturity of the policy, he cancelled the original nomination and made a new nomination in favor of his 15-year-old son. With reference to provisions of Insurance Act, explain the provisions regarding nomination by life insurance policy holders, state whether a minor can be a nominee in a life insurance policy. सर किसी और को भी अपॉइंट करना पड़ेगा जब तक वो 3 साल और मतलब 18 तक नहीं हो जाते हैं. जो नॉमिनी उन्होंने अपॉइंट करे उनके साथ किसी और को भी अपॉइंट करना पड़ेगा उन्हें. से मतलब जो माइनर रहते हैं वो उसे क्लेम नहीं मिल पाएगा. So is he right in changing nomination? Hello, is he right in changing the nomination? Because originally he gave for somebody, his friend. Later on he wants to change it to his son's name. अभी इसमें क्या गलती है, इसमें क्या वो ज्यादा करना है, आपने बताया है. What should he do? Tell me. ये सर मैं बोल रहा हूँ सर माइनर को जो है जो भी क्लेम वगैरह होगा नहीं मिल पाएगा तो मैं किसी और को भी साथ में जो है नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा. He should nominate somebody else also as a guardian for him to receive the money. Good. So that's what is given here. Further, Mr. Ram, while nominating his minor son a nominee, has to appoint any adult person in the manner laid down by the insurer,
to receive money secured by the policy in the event of his death during minority of the nominee. Good, excellent, very happy. Mr. Rama wants to nominate Mr. Krishna, his 10-year-old son, as a nominee for his life. I said this is the same thing. You are told the same point. Yeah, same point. No point in repeating it. In February 2020, Mr. Madan Lal of Delhi filed a complaint with Insurance Ombudsman for the mis-sale of 2 assured money-back policies by Future General Life Insurance Company. So, what are the circumstances under which this could have happened? Why this has happened? You know, he is making a complaint with the Insurance Ombudsman for mis-sale of 2 assured money-back policies. Hello, I think the answer is really tough for you to answer because it is not very clear. He alleged that the policies were sold to him by the insurance company representatives with the promise of transfer of bonus of old policy. After some time, he realized the mis-sale and applied for cancellation of policy and refund of the premium, but it was rejected in view of being beyond the free look period. Following an online hearing of both the parties, the forum ruled the complaint was allowed and directed the insurer to cancel both policies and refund the premium collected so far within 30 days. I think this is a live case. I think this is a live case. Very good. Then now, did you go through some of the glossary terms and all? Sir, I have gone through principles of communication or principles of insurance. Can you please tell me about principles of insurance? Sir, principle of indemnity, Okay, principle of subrogation, good, principle of loss minimization, good. and sir, principle of proxima and maxima. So I can remember only these. Why? You must remember the 7. You must be able to remember the 7 principles of The insurance. principle of contribution is also there. Principle of contribution. और क्या कुछ मिस किया है? देखिए. Yes sir, वो एक रह गया. देखिए. Yes sir, utmost good faith रह गया. Utmost good faith. Then insurable interest, indemnity, contribution, subrogation, loss minimization, principle of casa proxima. What is principle of casa proxima? सर इसमें होता क्या है कि जो मेन रीजन है डेथ के पीछे वो पता होना जरूरी है. Good. जैसे What is किसी ने principle of good faith? Utmost good faith. सर ये सर पॉलिसी लेते समय आप कोई भी गलत चीज मतलब कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन अपने बारे में जो भी इंश्योरर है उन्हें नहीं बताएंगे. उस अगर बाद में अगर कोई कमी पाई जाती है तो आपकी पॉलिसी कैंसिल भी कर सकता है. आप क्लेम को कैंसिल What is principle of insurable interest? इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज लाइक जो भी आप इंश्योरेंस करा रहे हैं आपका उसमें इंटरेस्ट होना जरूरी है. ऐसे नहीं कि आप किसी दूसरे के घर का इंश्योरेंस करा देंगे Super. या किसी. वेरी गुड. बट अच्छा बात करते हैं लेकिन थोड़ा डल से बात करते हैं. यू आर नॉट टॉकिंग हैप्पीली. क्यों? बोलो. ये मुझसे काफी लोगों ने बोला है, पता नहीं समझ नहीं आता. फिर मैं जब चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो फेक साउंड करता है. नो नो, यू आर नॉट एट ऑल स्माइलिंग. सी इतना अच्छा पढ़ा है बट इट शुड बी टोल्ड टू अदर्स इन अ वे दैट दे लाइक. आप स्माइल करके बात करने से अभी हमको मन में क्या लगता है, अरे इनको क्यों इंटरव्यू लेना है, ये तो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है. सही बात है. बिना इंटरेस्ट बात करते हैं, ऐसा सोचते हैं हम. सो ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए. यू मस्ट बी मोर हैप्पी. यू आर ए यंग बॉय. हाँ, स्माइल करो ना, अच्छा से स्माइल करो.
हाँ, तो सर वेरी। मतलब जैसे बट एक आई नो यू आर जो हैविंग टेंशन। अभी ये टेंशन मेरे साथ में होने से उधर में कितना टेंशन होगा, और भी ज्यादा नहीं होगा। सर इस नहीं सर इंटरव्यू का टेंशन नहीं है। उधर में नहीं होगा। नहीं इंटरव्यू का अभी भी टेंशन नहीं है मुझे। टेंशन है? नहीं है सर। नहीं है? अच्छा ठीक है। नहीं बट वाई आर यू नॉट स्माइलिंग? दिस इज हाउ आई टॉक सर। इट्स एंड ये तो ओके। ऐसा नहीं ना, थोड़ा स्माइल करने से बढ़िया हो जाएगा। नेम 5 यूनियन मिनिस्टर्स एंड देयर मिनिस्ट्रीज। सर निर्मला सीतारमन जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। ओके। राजनाथ सिंह हमारे जो है सर डिफेंस मिनिस्टर। अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री हमारे। नितिन गडकरी जी रोड एंड हाईवेज। एंड आई कैन रिमेम्बर ओनली फाइव ओनली फोर। वाई आर यू स्ट्रगलिंग? यू शुड रिमेम्बर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का नाम क्या है? इट्स अ फेमस नेम। देन अमित एग्रीकल्चर शाह। अमित शाह बोला आपने, अमित शाह। एंड यू टोल्ड अबाउट वैष्णव। ओके, स्मृति ईरानी बोला? नहीं सर। नहीं। एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर का नाम क्या है? 1 मिनट, आई एम सर फॉरगेटिंग। स्पोर्ट्स मिनिस्टर बोला जा सकता है वो ठाकुर जो है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर इज नरेंद्र सिंह तोमर। ये सर नरेंद्र सिंह तो। वेरी, ये सब थोड़ा रिवाइज करके जाइए ना। कल का हाँ जी सर। कागज, कल का कागज में क्या न्यूज़ है? सॉरी सर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं था। ऐसा होने से तुम थोड़ा 1 मार्क कम होगा। यू प्लीज हम्म, प्रिपेयर कल का न्यूज एवरी डे। लास्ट संडे से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये श्योर सर। पहले पुराना संडे से। ठीक है सर। ओके। बेस्ट विशेस। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। अटेंड द थैंक यू इंटरव्यू सो मच। विथ कॉन्फिडेंस एंड कम तो जैसे एंड एक चीज मुझे पूछनी थी जैसे मैं जैसे स्माइल करके इतना बात कर रहा हूँ इतना ठीक रहेगा? हाँ, करेक्ट। You should smile and speak. 1 minute. Why it is coming as view? 1 minute. हम्म, Either view. It's coming. It doesn't matter. No problem. Um, hmm, yeah. So you smile, smile. Abhi smile karo. Good. मतलब If you इतने smile, if इतना you स्माइल smile, करके how much is the mark for interview for this thing? 40 marks or how तो much? 60 मार्क्स। 60 mark. Okay, best wishes. I will give you easily 45 out of 60. But you should try to score more than 55. मोर देन 50। यस। Smile करके जाओ, मिल जाएगा। Best थैंक wishes. यू सर। थैंक यू सर। मतलब God, सर क्या आपको क्या क्या कमियां लगी तो मुझे जो 2-3 दिन मेरे पास है उनमें मैं इम्प्रूव कर सकता pardon? हूँ? सर मुझे मैं पूछ रहा था मेरे अंदर मतलब क्या कुछ दो No, तीन no. कमियां No, लगी जो। comments, हम बोल देगा। 1 minute. इसको स्टॉप हाँ, कर देगा। हम्म,